इंडिया में फॉर्च्यूनर की कुछ ज्यादा ही हाइप है। ऐसे 50-50 लाख में लोग खरीद रहे हैं, तब भी इस गाड़ी पे वेटिंग चल रही है। देखते हैं भाई बाहर के लोग क्या सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में, और एकदम उल्टा सोचते हैं। आपको भी दिखाने वाला हूँ, और उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। रिसेंटली भाई आप सब काफी बढ़िया सब्सक्राइब कर रहे हो, करते रहो, काफी मजे आ रही है। तो सबसे पहले ये हमारा रिव्यू है कार सॉस वाले भैया का। ये थोड़े क्रिटिकल होते हैं जनरली कार्स को लेके, तो देखते हैं भाई ये क्या कहते हैं नई वाली फॉर्च्यूनर के बारे में। और ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड यूट्यूबर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का परसेप्शन हम मान सकते हैं। Honest, I don't even want to release this review, so if you're seeing this, I've probably made a bad decision. This is the Toyota Fortuner, and if I'm being totally honest, I think it's one of the worst cars that Toyota makes. वर्स्ट कार दैट टोयोटा मेक्स, हमारे भैया ने बोल दिया। तो भाई अभी हम लिटरली जाते नहीं है कि क्या ये बोल रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने अटेंशन गेन करने के लिए ऐसा बोल दिया नीचली, बाद में अपना जो ऐसा माइंड है चेंज कर ले। तो अभी भाई देखते हैं भाई क्या बोलते हैं ये। वैसे अगर आपको बता दूं तो ये शायद पहली वाली जनरेशन है, क्योंकि इसकी लाइटें पुरानी है। तो हो सकता है भाई ये पहले वाली जनरेशन के हिसाब से बोल रहे हो। Now, Toyota makes some really good cars. RAV4, top of the class. GR Yaris, top of the class. This thing, not so much. Although this Hilux engine is really reliable, you can hear it. It makes a lot of sound, and that travels into the cabin. हाइलक्स में इंजन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, भैया जी कह रहे हैं, जो कि भाई सही बात है। 2.8 लीटर का इंजन है, काफी पुराना है। पर यार इंडिया में तो इसे भी भाई बहुत पसंद करते हैं, तो भाई हम क्या ही बोले। Inside, you have to have one of the most dated interiors. You've got a tiny little screen up in front of you that doesn't show very much. These leather seats are a $2,500 option, and they're not very comfortable. $2,500 ऑप्शन देखिए कितना है, 2500 1,33,000 की इसकी लेदर सीट्स है। हमारे इंडिया में भाई फ्री है, हमें भाई टेंशन की जरूरत नहीं, हमें स्टैंडर्ड मिलता है। This is all old Toyota design. This steering wheel is okay, except for the fake wood on the top. It feels really cheap. The back seats are okay at best. You can't charge through anything but a 12-volt socket. I'm 5'11", not the tallest human, and I fit okay, but my legs are at a really bad angle. And then because of how these back seats fold up, you actually lose quite a lot of room in the back. People always say I'm a Toyota hater. No, they make some really good cars. This just isn't one of them. तो भैया जी कह रहे हैं कि भाई उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रैक्टिकलिटी है नहीं गाड़ी में। और मैं भी जेन्युइनली बताऊं तो यही मानता हूँ। ये गाड़ी काफी अच्छी दिखती है भाई, पर ऐसे इतना जेन्युइन इसमें वो नहीं है यार। कुछ एक्स फैक्टर अगर आप देखें जिससे गाड़ी इतनी डिस्टिंग्विश बने, पर भाई अभी परसेप्शन ही बनाते हैं। अभी देखते हैं भाई और बाहर के लोग क्या सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब भाई ये रिव्यू देखते हैं हमारे drive.com वाले भैया का, भाई इनका क्या कहना है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, तो इनका भी परसेप्शन सेम ही होने वाला है। 2021 Toyota Fortuner, and it has been updated recently. We've got a bit more power and torque from that 2.8 and everything. Let's get stuck into it. MUX and Mitsubishi's Pajero Sport, as well as the broader range of more road-focused large family SUVs. The Fortuner does get a few upgrades for late 2021, but confusingly for us, our test car did miss out on these changes. Crusade's specification in particular now gets a 360-degree reversing camera, which can put in an emergency call in case of an accident, send your location to emergency services, and track the car in case of theft. These upgrades do bring a bump in price, however. For the Crusade spec like we have here, you're looking at $62,900 की भाई। तो देखिए कितने की है, 33 लाख की भाई। 4x4 फॉर्च्यूनर है ऑस्ट्रेलिया में भाई, हमारे इधर 50 लाख रुपए की। ये क्रूसेड, वैसे वहाँ पे जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट है। जैसे क्रूसेड लिखा हुआ है, हमारे इधर एक ही वेरिएंट आता है, पर उसमें डिफरेंट ड्राइव ट्रेन्स आती है। I feel like the years have been somewhat kind to the Fortuner. This is a car that did get off on the wrong foot in Australia. It was a bit too expensive and didn't really seem to suit our taste. It's been outsold by most other cars in this. Outsold by most other cars in the segment. वाह यार, हमारे इंडिया में भाई ये कोई बात बोल देना, the segment is Toyota Fortuner itself. Segment and other Toyotas as well. Think about Prado, think about Hilux, think about Land Cruiser, think about Kluger. They have outsold this thing massively over the years. अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो लैंड क्रूजर है, जो प्राडो, वो ज्यादा बढ़िया बिकती है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। और उधर भाई बेनिफिट भी है भाई कि प्राइस डिफरेंस इतना कुछ ज्यादा नहीं है, तो इसलिए लोग ले लेते हैं। पर भाई इधर जो लैंड क्रूजर है 5 गुना महंगी है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर, तो ऑब्वियसली भाई हमें ये लेनी पड़ेगी। आप देखते हैं भाई ये क्या बोलते हैं हमारे कार्स एक्सपर्ट वाले भैया। G'day, I'm Paul. So when you've got a winning formula like the Toyota Hilux, why not turn it into a big old SUV? That's kind of what they've done here. This is the Toyota Fortuner. It is the 7-seat version of the Toyota Hilux, so it shares the same platform with it. This right here is the top specification Toyota Fortuner Crusade, priced at a little over $61,000. This is a little bit too much. The entire range starts at just under $50,000. There's a couple of options in there. Right, so moving on to practicality, and we'll start with connectivity. I don't know why they do this, but there is one USB port up here, and it's this one here. The second you have your phone plugged into that for smartphone mirroring, you have nowhere else really to charge your thing unless you use a... जितनी मर्जी कोई बंदा जस्टिफिकेशन दे दे कि भाई ये रगड़ है, ये है भाई, पुराना हो गया इसका इंटीरियर काफी। बाहर की मार्केट में गाड़ी 2015 में आई थी, अब 2024 आने वाला है, तो ये गाड़ी 9 साल पुरानी हो गई है। भाई
हमारे कार सॉस वाले भैया का रिव्यू है अल्टीमेट, जो इस गाड़ी के बारे में क्रिटिकल है। देखते हैं भाई इनका क्या कहना है इस गाड़ी को लेके। And now we're shooting the introduction segment. I'll be totally honest with you guys. I don't even know if you're going to see this, so I might be talking to nobody. I'm not here to poo-poo on Toyota, but I've got to say this is just a disappointment, man. Kind of is. Maybe we just have to stop going to the Toyota press fleet and getting their, I don't know, poorer cars, because this car's like the GR Corolla. That looks amazing. GR Yaris, best hot hatch you can buy if you can even buy it. GR86, yeah, it's not the best spec, but it's a great driving rear-wheel drive enthusiast car. But I mean, man, I'm just disappointed. Why LED, as my parents would say, experimenting. You got these daytime running lights here. You've also got a fog light here, pretty bright, and a turning signal down there. The redesigned grille, or at least it was redesigned when the Hilux was updated. ये शायद ये जो ऐसे LED वाला फंक्शन है इंडिया वाली फॉर्च्यूनर में शायद ही नहीं आता मेरे ख्याल से, पक्का कंफर्म नहीं है, पर इंडिया वाली में शायद ही नहीं आता, पता नहीं। 2 years ago, this Toyota badge here is also your radar. This thing has adaptive cruise control. It does cut off under like 25 kilometers an hour, but whatever, it's got something. And then down the bottom, you have a little bash plate because, of course, this thing is a proper off-roader, and that's a protects the under. Here, you can see you've got keyless entry and go. That's pretty cool. You've got these side steps here, really long roof rail on top. You can also see privacy glass here, and it actually extends to the back there too. I kind of like the design. In fact, I think this side's my favorite angle. Yeah, it looks pretty sleek. Yeah, I think I'd agree with you, even though it is just a giant rectangle. In fact, from the जायंट back. रेक्टेंगल भाई, तो आपको पता नहीं है जायंट रेक्टेंगल के पीछे इंडिया की आधे लड़के मरते हैं। Okay, so coming to the back, and I mean, it's pretty decent. You got these ये तो भाई tail पुरानी lights here. वाली They टेल look लाइट्स ऑब्वियसली। अब इंडिया में नई वाली आ गई है, बाहर भी नई वाली आ गई है। शायद इन्हें भाई थोड़ा बेकार वाला इसका स्पेक मिला है, तो इन्हें ये वाली लाइट्स मिल गई। kind of cool. Got the Fortuna badge there. That's also kind of cool. Spoiler up top, and you have a full-size spare at the bottom. Although that is pretty standard in this class. I don't know, man. It's not inspiring, but it's a decent-looking SUV. Yeah, good enough. Let's check out the interior. Okay, so despite having spent the equivalent of like a month driving Hiluxes over the past year at Toyota Fortuna, I'm going to give this interior the better out and be as if I've just stepped. The design, it's old Toyota. That's what it is. You've got this older center stack here with this digital clock up there. That is very reminiscent of like late 2000 Corolla. It's okay. It's fine. But if you compare it to the competition, like the Ford Everest, totally blows car out of the water. भाई सही में यार एवरेस्ट का और देखो यार कितना ज्यादा फर्क है दोनों कार्स में। तभी भाई ये गाड़ी इंडिया में अगर एवरेस्ट आ भी गई तब भी पागल हो गए इंडिया के, पता नहीं क्या है, उन्होंने यही लेनी है। You do get some such materials dotted around there. That's nice, but yeah, a lot of the touch points really aren't that nice. And really, the worst example of that is this. Listen to this. Ugh. That is just like hard plastic. You can even see the plastic injection molding there where they've been put together. It's really uncomfortable, man. Like it hurts your elbow. I hate it. इतना गंदा होता है क्या फॉर्च्यूनर का? ये मैंने नोटिस नहीं करा कभी। So you've got this like little storage area here for your phone. It's not a wireless charger, even though it kind of हमारे looks इंडिया में like it. वायरलेस And चार्जर है भाई। बाहर अगर आपका स्पेक थोड़ा कम है उसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे इंडिया में थोड़ा बढ़िया स्पेक है, पर भाई 20 लाख का ऑलमोस्ट फर्क है, तो तब भी चलता ही है। We're gonna do it anyway. We have a special 11.3 seconds to 100. 11.3 सेकंड टू 100, दूसरे वाले भैया का 9.7 था, तो इसमें भाई इनकी खुद की गलती है भाई। 9.7 वाले भैया भी है, तो This 6-speed automatic transmission is fine. You don't really notice it, which is a good thing. What else? What else? It's so reliable as well. Yeah, like maybe if you discount the fact that it has a diesel, a lot of the kind of stranded. और आपको अगर पता नहीं, जो फॉर्च्यूनर है या फिर टोयोटा की काफी सारी जो ऑस्ट्रेलिया में डीजल कार्स है उसमें एक डीपीएफ ऐसे स्कैंडल टाइप था, इसमें इनके अंदर खराब डीपीएफ फिल्टर्स डाल रही थी कंपनी और गाड़ियों में दिक्कत आ रही थी, और टोयोटा को ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ खर्चने पड़े थे कुछ ऐसे सारे जो कस्टमर है उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए। तो इसलिए भाई ऐसा नहीं है कि गाड़ी कुछ ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऐसा है कि मतलब रिलायबल है, कहीं पे भी ले जाओ इस गाड़ी को। हाँ काफी रिलायबल है, पर ऐसा नहीं भाई कि खराब नहीं होगी, ऑब्वियसली हो सकती है। On the seat of my pants right now, I just think you'd be insane. From the small, unclean of your pants. The small, uncomfortable seat of my pants. I honestly think insane to buy. Insane is not the right word. I think you want reliability, just enough, especially on the inside. सिली टू बाय वन भाई, लिटरली ये तो बोल रहे हैं कि अगर आप इस गाड़ी को लेते हो एज कम्पेयर टू बाकी सारी कार तो आप थोड़े इडियट हो। भाई इंडिया में तो आधे लोग यही कर रहे हैं यार, ऐसे ऐसे तो मत बोलो यार, क्या क्या बोल रहे हो भाई, आप फिट हो गए क्या इंडियन से? हैरिस पार्क पहुंचो चैलेंज करके। ठीक है वीरे, चैलेंज एक्सेप्टेड। भाई देखते हैं यार, एक इसका साउथ अफ्रीका का रिव्यू भी आपको दिखाई देता है। For the 2023 model year is that you now get two-tone leather, so you get this ये sort तो भाई of मेरे ख्याल से red लेजेंडर है, मेरे ख्याल से, क्योंकि डुअल टोनर सामने लेजेंडर वाली लाइट्स है, तो इसलिए शायद वही है ये। thing happening on the door and on your seats. From Ford, which is a 2-liter bi-turbo, and that puts out 154 kilowatts and 500 newtons. So it used to be the case that if you bought the top spec Fortuna or the top spec Hilux, you were actually quite down in power compared to its rivals, and that is not the case. So you can get into a Fortuna for 653,000 rand. 653,000 रैंड भाई, साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है भाई। तुम क्या सोच रहे हो, बदतमीजी वाली चीजें सोचते रहते हो तुम। 650,000 कितने हैं भाई,
भाई 28 लाख रुपए से स्टार्ट होती है भाई बाहर। हमारे इंडिया में भाई लूट मची हुई है भाई, 45-40 लाख से स्टार्ट होती है। 1,000 ront for a top spec Toyota Fortuner. But what's so interesting about the Fortuner range is that if you look into the sales stats, the best selling Fortuner is this one, the 2.8 VX, the top spec, the granddaddy, the most expensive one. This is the best seller. Is that you get a lot of your money back when you come to trade in or sell the car. The depreciation on the Fortuner is very, very light. You get... तो भाई ये बात तो सही बोली इन्होंने कि डेप्रिसिएशन काफी बढ़िया है, मतलब काफी कम है, और जब भी आप बेचने जाते हो तो आपको काफी एक मेजोरिटी आपकी वैल्यू मिल जाती है गाड़ी की दोबारा वापस। यार ये तो है, पर इसकी वजह से यार गाड़ी चेंज थोड़ी कर दोगे आप अपनी, मतलब जो आपका डिसीजन है, जो आपको कंफर्ट चाहिए वो थोड़ी आप चेंज कर दोगे। तो भाई देखते भाई क्या क्या कहते हैं आगे। The reality is that Ford is really gunning for Toyota's top spot in this segment, and they have gone all out with the Ford Everest. Because of the pricing in the Ford Everest and the size of it as well, Ford says that that is now a Prado rival, and we are due a new Prado fairly soon. I think the current Prado has been on sale in some way, shape or form, I think since 2013, if I'm not mistaken. So it's a very old model that the Everest has potentially moved up a segment. I think for the average South African consumer, they look at the Fortuner and the Everest as really close rivals. Now, don't get me wrong, the Fortuner is not unsophisticated, but the Everest really has stepped up the game in terms of the cabin and the exterior looks as well, and also the ride quality. But there are things which are starting to look very dated in here. This screen, for instance, the graphic resolution's pretty low. It's also quite a small screen. And then your aircon down here is just this old LCD panel. But I've always sort of felt that Toyota owners don't actually care about any of this. In fact, I actually think Toyota owners, when they see this ancient clock over here, which is the same clock that I have on my Lexus from 1996, and which probably existed 20 years before that, do you know what I think they see? I think they see reliability. I think they see a less complicated car with less to go wrong. And I really do think Toyota banks on that. So if you're looking for the most modern, up-to-date cabin, the Fortuner is not for you. But then again, at the end of the day, we know these cars are pretty much bulletproof, and that's why people buy them. भाई सही बोला भाई हमारे Cars.co वाले भैया ने कि the car is pretty reliable. People who buy them want a simple car. तभी वो खरीदते हैं। पर यार सीरियसली अगर मैं बताऊँ तो मुझे इतनी वैल्यू फॉर मनी लगती नहीं है। जो एंडेवर है या फिर एवरेस्ट है, माइल्स अबाउट है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। आप मुझे बताना आपको कैसी लगती है फॉर्च्यूनर। और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।